ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, so what we have done here is, so here is a JSON copy, right? So the client had given us the specs for getting the token. तो ये मैंने token का किया. You get the authenticate, headers, content, body, username, your password. So the password is capital P. I had done it with small p. That is why they got a. Then the token comes in. Access this thing. Now I need to do the second portion. So how this has been done is, output, I made a collection, right? And then I'm getting token. So these return messages were to be specified by the client. Message, reply, code, authentication, token. But this was not there in the documentation. So now I have it. And I get the reply message, the expiry date and time, token, reply code, and what is the date and time. So local string, system HMS, which is a JSON tag, date, time, and the expiry date time has not yet come, but I don't really need it. I just need the token, because this was something that has to be returned. And here when you do when you call the report, so you need to be careful. So what had happened was that I had simply followed this password. I had done P capital. Alright, so that is where I went wrong, because they actually needed it small. JSON tag was small p part, this thing. So fields is password 1 and JSON tag had to be smaller, and then the authorization token, and these are the usernames, Aman, and it goes here, correct? Tag data, so this portion of the report is not longer required. So only this report was required: part, score, lines, part, field, username, password, and this. Correct? And then based on the output of this collection, we made the output, right? We made the report. And the storage is going to be authorization token, expiry date, message ID, message string, print date. Right, this is how this object is coming out to be. Correct. So I go here and I save it. And what I do here is I go here and go and configure it, product and features. I load this token. So I say e:\masoom /. If I put it as save, I close it, and this is going to be the token. I pick this up, it's the same copy. Security JSON_copy.txt, JSON_copy.txt, and if I do this and then I go here and then I go to output report and I get the token here. Right, now this token I've got to use for the second GET request. So what I do is I now study what are the attributes which are required.
So I need to get a server request, so it says this. So I pick from this collection, I pick this collection, transaction 1, right? I'll pick this one up. Copy. And then what I do is I go here, getting the data from remote server. So let me try this one out. I say Control V, and now I name this as getting the data from remote server. I name it as 1. Then instead of this authenticate, I go down and say transactions, right? यही होगा ना, server host transactions, यही होगा ना. Okay, I go and get this as a transactions. Okay. Then he says, and in the HTTP header, this is export header. Then I say this transactions, and then I say export header. So he says export header this. So I pick this up. And I pick this up, this up, this up, plus, and here here, and this will be a function to get the token, to get the token. यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे इसका, ठीक है ना. तो ये access authorization bearer is equal to, is there going to be a remote request here? No, there's only a header. This is a blank collection which we have done. Then on this, the response field is going to be reply code int. So storage
reply code, and this is int. Then reply message string, reply message string. Then payload list, but payload list, the details are not there. So snipping tool, so details are not there for payload list. Right. So details are missing for payload list. Details are missing for payload list. तो इसको जो है मैं अभी इसके डिटेल्स नहीं करवा पाऊंगा, पर अभी के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई एंड पुट इट एज अ स्ट्रिंग. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स. सो payload list is an storage object, list is a string. Then इसको ऐसे ले लो ना, reply message इसको ऐसे ले लो. Then ये आ गया payload list is a string. Now ये हट गया. I'll tell you what happens. Then I bring an object which is this ERP models, क्योंकि इसमें जो है तो ये किया मैंने. Then control V. Now the collection name is the same as this. ओके. अब इसमें स्टोरेज आया ऑफ द फॉलोइंग: कोड, string, transactional number, int, then इसमें int होगा ना, फिर discrete string, फिर discrete a string, फिर transaction date string,
चलो इसमें ये होगा ना, ट्रांजैक्शन टाइप स्ट्रिंग, फिर राम रहीम, एसजे कोड इंट, फिर टोटल डीबी अमाउंट डेसिमल, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, डीबी अमाउंट इज डेसिमल। अब इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, डेटा टाइप्स इन टीडीएल टैली, string amount rate number, string rate number। तो इसमें ऐसे कर देते हैं, जहाँ पे भी int है वहाँ पे हम वो कर लेते हैं नंबर, नंबर, फिर अमाउंट, this is amount, right? Then we credit amount, फिर करेंसी कोड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, फिर करेंसी स्पॉट रेट अमाउंट, ये अमाउंट होगा ना सारा लॉजिकल, इसके नीचे ऑब्जेक्ट आएगा ना, करेंसी स्पॉट रेट अमाउंट, अमाउंट, फिर src source trace is a string, फिर reference date is a string,
date is a string. फिर reference type is a string. फिर balance is logical. फिर posted is logical. Balance is logical. Then posted is logical. Then downloaded flag type is string. फिर इसको खींचा ना बच्चा, इसको लो, फिर डाउनलोडेड रिमार्क्स इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें जो है ये रिपोर्ट सब रिपोर्ट, so it's basically a report and a sub report basically. Now this is a list, so list basically means now there is a another collection. So I picked this up, collection, और नाम क्या हुआ, transaction lines. अब इसमें स्टोरेज फिर से शुरू हुई, क्योंकि एक और जेसन लिंक हुई ना, बड़ी ज़बरदस्त लिंक है, राइट। राम राम राम, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। फिर स्टोरेज, string, then transaction number, फिर डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, इसके इंटीरियर लाइन मॉडल्स हैं क्या, जय सिया राम, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, फिर डिस्क्रिप्शन है स्ट्रिंग, फिर
करेंसी कोड स्ट्रिंग, फिर अकाउंट नंबर स्ट्रिंग, फिर दिस इज अमाउंट, ये डेसिमल करें अमाउंट करते हैं। जय सिया राम। फिर क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट, फिर लाइन नंबर, नंबर, स्टोरेज आ गया ना, तो स्टोर हो जाएगा ना। अब इसकी रिपोर्ट हम दिखा देंगे। फिर dim01 स्ट्रिंग, क्योंकि उस कलेक्शन पे वॉक करके ऑथराइजेशन टोकन लेके आना है, ये हो जाएगा ना। टोकन बस हो गया खत्म। फिर स्टोरेज dim02 स्ट्रिंग, फिर dim03 स्ट्रिंग, फिर dim04 स्ट्रिंग, फिर dim05 स्ट्रिंग, फिर dim06 स्ट्रिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर स्ट्रिंग। अब यहां तक हम पहुंच गए कॉन्ट्रैक्ट नंबर। Now what happens is another collection comes in, which is the collection of activity. तो ये पकड़ा आपने कलेक्शन सी, ये, और इसका नाम दिया एक्टिविटी। ठीक है बेटा। फिर स्टोरेज पे आ जाओ। फिर ये 3 फील्ड आ जाएंगी, कोड, स्ट्रिंग, फिर डिस्क्रिप्शन ई स्ट्रिंग, फिर डिस्क्रिप्शन ए स्ट्रिंग,
फिर नीचे आओ, इसी को ऑब्जेक्ट लिया तुमने, कलेक्शन कंट्रोल वी, फिर ब्रांड, राम 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 चले, राम चले राम, राम 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 चले, राम चले राम, फिर ब्रांड के बाद सिटी, ये सही है, सिटी, सिटी, सिटी हो गया, फिर टेनेंट, फिर आइटम, राम 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 चले, राम चले राम, ये तो बन गया तुम्हारा स्कीमा। ठीक है ना। अब लेना है यूज द फंक्शन टू गेट द टोकन। ठीक है ना। तो उसका कोड यहां से चेपते हैं, इससे सब कुछ आ जाएगा। फंक्शन ये कंट्रोल वी, फाइनल पोस्टिंग फंक्शन ये आया, रिटर्न स्ट्रिंग, हटा दो इसको, हटा दो उसको, वॉक कलेक्शन हटा दो, सेट ऑर्डर डॉलर, इसमें वैल्यू क्या थी उसकी, टोकन, एंड वॉक, एंड वॉक हटा दो, हटा दो, ये हो गया आपका रिटर्न। तो ये आ गया तुम्हारा डॉलर फाइनल पोस्टिंग फंक्शन। हो गया है राम तेरे पथ पे चलता हूँ। हो गया ऑथराइजेशन बियरर, ये 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 बस। अब मेरे को इससे रिपोर्ट बनानी है। ठीक है।
इसको कल करें क्या अभी करें? इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो रिपोर्ट वाला. I'll call the report ना. Make the